चलो, collisions, keep reading. Collisions. आपको मालूम है व्हाट इज मीनिंग ऑफ कोलिजन? कोलिजन मीन्स दो पार्टिकल आके झुम बोल के टच करेगा ना, कोलिजन्स बोलते हैं। ओके, सो इसमें आपको एक चीज यू टू अंडरस्टैंड दैट कोलिजन मीन्स इट इज नॉट ओनली फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन टू बॉडीज। ओके, इफ वन बॉडी का फोर्स के वजह से उसका पाथ आल्सो विल चेंज, देन आल्सो वी कैन से कोलिजन। सपोज मान लो ये दो बॉडीज आर कमिंग, इसके वजह, इस फोर्स के वजह से, मे बी मैग्नेटिक फोर्स होने दो, कुछ भी होने दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने दो, इसके फोर्स के वजह से इसका पाथ चेंज हो गया, तो देन आल्सो वी कैन से कोलिजन। Collision means it is not only direct physical contact. Okay, so liquid definition: collision between two bodies is said to take place if either of the two bodies come in physical contact with each other, or even when the path of one body is affected by the force exerted due to the other, then also we can say, we call as collisions. इसमें थोड़ा फर्स्ट इनिशियली थोड़ा थियरिटिकल रहेगा, पूरा अंडरस्टैंड करो, इसका क्लासिफिकेशन समझो। सो एक बड़ा क्लासिफिकेशन रहेगा, वो क्लासिफिकेशन का समझो। सो डायग्राम देखो, समझ में आएगा। देखो, टू फिजिकल कांटेक्ट भी हो सकते हैं, और एक पार्टिकल पाथ जा रहे हैं, एक पार्टिकल जा रहे हैं, इस फोर्स के वजह से द पाथ विल चेंज, देन आल्सो वी कैन से कोलिजन हैपेंड। डन ना? नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन्स, बड़ा टेबल रहेगा, अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ कोलिजन्स, ये पूरा। Can you go back for 1 second? I just draw the figure. Yeah, Saddam. तो टाइप्स ऑफ कोलिजन्स, बड़ा टाइप है, अंडरस्टैंड करो उसका। यस, वेरी स्मॉल टेबल, राइट? ओके, देखो, टाइप्स ऑफ कोलिजन में, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन में वी हैव वन डायमेंशन कोलिजन और हेड ऑन कोलिजन, वन डायमेंशन कोलिजन और हेड ऑन कोलिजन। सेकंड वन, टू डायमेंशन कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन बोलते हैं, टू डायमेंशन को वी कॉल एज ऑब्लिक कोलिजन। ओके, नाउ वन डायमेंशन मींस ऑलरेडी यू नो, वन डायमेंशन मींस ओनली दो पार्टिकल के बीच में जाके हिट करेगा तो इट विल गो इन स्ट्रेट लाइन, वन डायमेंशन ओनली। देखो, a collision in which particles move along the same straight before and after collision is defined as one dimension collision. And two dimension means ये बॉल जाके हिट करेगा ना, लाइक कैरम बोर्ड में कॉइन हिट करे तो ये तो ऊपर हिट के तो क्या होगा, कॉइन विल गो लाइक दिस एंड दिस विल गो लाइक दिस, इज अ टू डायमेंशन collisions. Okay, so a collision which the particles move in a same plane at different angles before and after collision. पहले सीधा आता था, थोड़ा हिट करे तो इधर उधर जाएगा। So that type of collision is nothing but two dimension or oblique collision बोलते हैं। Now on the basis of kinetic energy, the collisions are classified into elastic collision, inelastic collision, and perfectly inelastic collision. These three categories are there: elastic, inelastic, perfectly inelastic collision. So इसका एक एक का डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एंड हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वन डायमेंशन का वी आर डूइंग इलास्टिक कोलिजन, inelastic collision and perfectly inelastic collision, one dimension में। and two dimension में we are going for elastic collision का we are using, and some example, one or two examples ले लेंगे inelastic का। okay, copy down neatly।
So based on the kinetic energy, they are classified elastic, inelastic, perfectly. मतलब elastic में kinetic energy before and after collisions remains same. Inelastic में if the total kinetic energy does not remain constant, change हो जाएगा. इसमें same रहेगा, इसमें change हो जाएगा. Perfectly inelastic में क्या होगा मालूम है? Loss of energy will happen. We will see एक एक का detail. ये तो है. Sir, I can't see it. It's blurred. Blood. Sir, I think it's my net, but I'm not sure. Yeah. कब बेटा सब लोग तो सिर्फ ये लिख लो, इसके बारे में डिटेल में सीखेंगे. जस्ट लिखो चाहे तो इलास्टिक कोलिजन, इनएलास्टिक कोलिजन एंड परफेक्टली इनएलास्टिक कोलिजन लिखो. दैट्स इट. नो नीड ऑफ राइटिंग दिस वन बॉटम में, बिकॉज हम लोग डिटेल में I wrote that for 1D and 2D. हाँ, दिस फॉर 1D 1 डायमेंशन में आल्सो वी आर लर्निंग, 2 डायमेंशन में ऑब्लिक कोलिजन No, में sir, for that I wrote the नीचे वाला part also. हाँ, नो प्रॉब्लम. या एंड बेस्ड ऑन काइनेटिक एनर्जी कृष्ण लिखो इलास्टिक कोलिजन, इनएलास्टिक कोलिजन एंड परफेक्टली इनएलास्टिक कोलिजन. दैट्स इट. अभी इसके बारे में डिटेल में सीखने वाला है. फर्स्ट वन वी हैव टू गो फॉर इलास्टिक कोलिजन. That's what I wrote. Done? Yeah. चलो अब देखो. So head on elastic collision. Head on means 1 dimension वाला. Head on elastic collision. इसमें क्या होगा देखो. The head on elastic collision in which the colliding bodies move along the same straight line path before and after the collision. देखो, दो ball are there A and B of masses m1 m2. It is going with velocity u1 and velocity u2. मान लो u1 is greater than u2, then only collision will happen, right? दोनों collide हुआ. This is before collision, a during collision, and collide के बाद velocities will change, right? v1 v2. So this is after collision, v1 v2. Okay. Now इसमें what is the meaning of elastic collision we will see. Like example देखो, collision between the ideal gas molecules are perfectly elastic balls. Like gas container में gas molecules are there, right? That we also always we treat as elastic collision. That's why chemistry में भी पढ़ेगा. Even हमारा kinetic theory of gases last chapter of the 11th class also we will study that gas molecules का जो भी collision होगा we assume that is elastic collision. Elastic collision. Okay. First लिखो, we'll talk about elastic collision. इसमें kinetic energy क्या हो जाएगा? See, momentum will be conserved or not in this में? Momentum will be conserved when this ball will hit the other ball. This will apply a force on this. At the same instant, this also will apply a force on this. Action, reaction pair, they cancel out each other. There is no external force. Momentum is conserved. But remember that all types of collision में momentum is conserved. Elastic होने दो, inelastic होने दो, और दूसरा भी होने दो. Momentum is always conserved. But coming to the kinetic energy क्या होगा मालूम है? Initially it has more kinetic energy. ये वाला थोड़ा मतलब speed कम है ना. So क्या होगा? When you hit करने के बाद kinetic energy in between will change. But after when separation,
because of elasticity property, again it regains the shape and everything, and final kinetic energy will be same. So matlab initial kinetic energy is equal to final kinetic energy in elastic collision. Whenever initial kinetic energy is equal to final kinetic energy, then we say it is elastic collision. Sometimes they'll give the scenario, they'll tell which type of collision it is. So based on the kinetic energy, we have to decide. Okay. Sir, will the V1 and V2 be same as U1, U2? No, not same, different. So done. Yeah. Kabada? Yes. Chalo. Now देखो, in this type of collision, momentum remains conserved throughout the collision. If I draw the graph of momentum versus time, momentum system का we are drawing versus time का graph, momentum is constant throughout the collision. पूरा collision में मतलब during collision, between collision, after collision, पूरा में momentum is conserved. But now when we talk to the kinetic energy, total kinetic energy of system remains same before and after the collision. No energy is lost on other forms due to heat or deformation. If I draw the graph between kinetic energy versus time, kinetic energy of the system versus time graph. So क्या होगा मालूम है? Initial kinetic energy is equal to final kinetic energy. But between में the kinetic energy will change because of deformation के वजह से the kinetic energy will change. वो मान लो एक कम है. This is a form of, this is the initial kinetic energy and this is the final kinetic energy. So बीच में आपको change हो जाएगा. This is called elastic collision. डिक्रीज हो जाएगा ना कोलिजन होने के बाद, सम साउंड एनर्जी फॉर्म में चले जाएगा, हीट एनर्जी फॉर्म में चले जाएगा. बट जनरली क्या होगा, वी आर एज्यूमिंग परफेक्टली इलास्टिक रहेगा ना, सो दैट्स व्हाई रीगेन्स द शेप एंड एवरीथिंग. अगेन टोटल एनर्जी विल बी ऑलवेज इक्वल टू द इनिशियल एनर्जी. So for Now this, does U2 always have to be greater than U2? U1 is greater than U2. But then only this head-on collision will happen. will happen. नहीं तो ये धीरे गए तो कभी कोलिजन ही नहीं होगा. Okay, sir. Now our intention is to find V1 and V2. IP में आपको 8 मार्क क्वेश्चन वाला आउट ऑफ 3 में 2 लिखने का. IP में you have section A, section B, section C, right? Section C में 3 क्वेश्चन में we have to write 2 questions. The 2 questions वाला में मतलब कौन सा चैप्टर्स में आएगा? One is work power energy, one question. A collision का derivations only will be coming, and then oscillation chapter and thermodynamics chapter. So Out of collision का derivation derivations only. for Derivations 8 वगैरह. marks. 8 marks. I will send the sample paper also for you. Just basically last 15 days में I will also take the IP test also in that में, so that आपको easy हो जाएगा. So उसका लिए टेंशन मत ले लो. Last 1.5 month we will see. 1 month we will plan. Okay. IP is easy. चलो. Now our intention is to calculate V1, B1, V2. एंड वो फॉर्मूला आएगा, वो फॉर्मूला बैठ करेंगे, उसके बेस पे क्वेश्चन भी करना पड़ेगा. ओके. चलो. सो वी हैव टू अप्लाई द फर्स्ट में क्या है आपको, व्हाट इज द, टेल मी इलास्टिक कोलिजन में व्हाट इज सेम, मोमेंटम इज सेम, राइट? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. ये कॉन्सेप्ट यूज करके वी हैव टू सॉल्व. सो इनिशियल मोमेंटम कितना है, मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड इनिशियल मोमेंटम. इसका मोमेंटम कितना होगा, m1 u1 प्लस m2 u2. दिस सिस्टम का वी आर अप्लाइंग, राइट? is equal to final momentum will be m1 v1 plus m2 v2. Now we am bringing this side, m1 I will take common, u1 minus v1 plus m2 I am taking common, m2 if I take common, yeah, okay, इस तरफ ले लो, हो जाएगा. Okay, is equal to m2 if you take common क्या आएगा, v2 minus u2. First equation. First momentum conservation is always satisfied for any collision. So initial momentum equal final momentum लगा के आपको you got one equation.
ओके, सेकंड कंडीशन क्या है इलास्टिक कोलिजन में? विच वन इज सेम? काइनेटिक एनर्जी विल बी सेम. इसी में काइनेटिक एनर्जी विल बी सेम, रिमेनिंग में काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं है. ओनली इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी सेम. दैट्स व्हाई इन स्टार्टिंग में based on the kinetic energy only divided these all things. So initial kinetic energy is equal to final kinetic energy. Now initial kinetic energy क्या है? Half m1 u1 square plus half m2 u2 square is equal to इसका half m1 v1 square plus half m2 v2 square. So half cancel. I brought this side one side. m1 times u1 square minus v1 square is equal to m2 times v2 square minus u2 square. Right? A square minus b square को I can write as a plus b into a minus b. m1 into u1 plus v1 into u1 minus v1 is equal to similarly इसका भी a square minus b square को a plus b into a minus b. So v2 plus u2 into v2 minus u2. Okay, this is second equation. Now एक बार divide करो 2 by 1. 2 divided by 1 करो, कितना आएगा? When I divide this by this, m1 get cancel, u1 minus v1 get u1 minus v1 cancel. So क्या बचेगा? u1 plus v1 बचेगा. And similarly इसका इसमें m2 cancel, v2 minus u2 cancel. Here v2 plus u2. So I am bringing this one, u1 minus u2 is equal to v2 minus v1. Very important. That means sometimes आपका IPA में इधर तक प्रूव करो बोलेगा. So this is what relative velocity of approach is equal to relative velocity of separation. देखो v2 minus v1, v2 is bigger, right? मतलब separation हो रहा है, v2 bigger है ना, वो separation होगा. ये वाला approach हो रहा है, u1 is greater, right? Approach हो रहा है. So relative velocity of separation. Okay. Relative velocity of separation. Our intention is to find v1, v2. So इधर तक आया, दो कंडीशन लगाया हम लोग. सिंपली दो कंडीशन से we got डिवाइड किया तो we got this one, relative velocity of separation approach is equal to relative velocity of separation. Now हम लोग क्या करेंगे, इसमें से our intention is to find v1 and v2, right? So इसमें से rearrange करके v2 is how much from this? v2 is how much? हो गया ना बेटा? मैं ये इक्वेशन को, थर्ड इक्वेशन को रीअरेंज करूंगा. सो फ्रॉम 3 क्या है, v2 इज हाउ मच? v2 इज इक्वल टू, ये सब कुछ इस तरफ लेके आओ, u1 minus u2 plus v1. Yeah. Now substitute this v2 in this equation so that I will get in v1. Substitute this v2 in here. So क्या होगा, m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 into v2 is u1 minus u2 plus v1. Now इसको rearrange करके if you get finally क्या आएगा, मतलब final result I will write. इसको rearrange करके v1 is equal to, मतलब I multiply this side, I will bring all one side and v1 को भी common लेके नीचे भेजे तो you will get as m1 minus m2 by m1 plus m2 into u1 plus 2m2 by m1 plus m2 into u2. This is v1. Okay. Same way in this expression में v1 is equal to बना के, and that v1 if I substitute here will get v2 आ जाएगा. So this is the formula we have to by heart. And v2 कितना होगा,
V2 इज M1 M2 चेंज कर लो, सेट सफिक्स चेंज करो आ जाएगा. सो इसको क्या आएगा, M1 की जगह में M2 लगाओ, M2 माइनस M1 बाई M1 प्लस M2 इंटू U2 प्लस 2M1 बाई M1 प्लस M2 इंटू U1. So U2 or U1? Right. This is U1 will become U2 and U2 will become U1. Okay. This is V2. This is the first formula in the collision में, elastic head-on collision वाला this is valid. Elastic head-on collision 1-to-1 वाला ऐसा hit करने वाला is nothing but V1 is equal to M1 minus M2 by M1 plus M2 into U1 plus 2M2 by M1 plus M2 into U1. देखो इसका फॉर्मूला कैसे आएगा, देखो अंडरस्टैंड करो का बेटा. Sir, so this is just used for finding the final velocity after the collision. हाँ अगर But एग्जाम में only in the second block. हाँ But this V2 formula is only for B, right? हाँ V1 V2 के And for A, you have to substitute V2 as V1. Oh, A is that one. Okay, in the bottom. हाँ. After substituting we will get this one. Okay. सो हियर अंडरस्टैंड करो, आप फॉर्मूला कैसे बैठ करेंगे, अभी बैठ करेंगे. देखो M1 प्लस M2 तो सेम ही आएगा, देखो M1 प्लस M2 बॉटम में आ रहा है. सो देखो सपोज आई वांट V1, V1 किधर आएगा, यू कम विथ ए के पास आ जाओ. फॉर्मूला क्या है, M1 माइनस M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस ए डबल रहेगा 2M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू U2. समझो V1 आने के लिए, V1 इज ए राइट, ए ब्लॉक के पास आ जाओ. सो स्टार्ट फ्रॉम हियर, M1 माइनस M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस ए डबल रहेगा 2M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू U2. ओके. नो V2 आने के लिए क्या चाहिए, देखो V2 आने के लिए B ब्लॉक में आ जाओ. टेल मी M2 माइनस M1 बाई M1 प्लस M2 इंटू U2 प्लस ए डबल रहेगा 2M1 बाई M1 प्लस M2 इंटू U1. समझ में आ रहा है, बोल सकते हो फॉर्मूला. Yes, sir. बोलो, हाँ बोलो V1 बोलो फॉर्मूला. M1 minus M2 by M1 plus M2 U1 plus 2M2 by M1 plus M2 U2. हाँ U2 आ गया आपको भी. पीछे बोलो V2 बोलो. V2 में सेकंड बॉडी के पास आ जाओ. V2 is M2 minus M1 by M1 plus M2 into U2 plus 2M1 by M1 plus M2 into U1. U1 खत्म, देखा सिंपल. देखने से हम ये बोलेगा कुछ नहीं, फॉर्मूला सेम. ओके चलो, अंडरस्टूड राइट ये वाला आपको भी आगे मानो. यस Yeah. चलो न्यूमेरिकल्स करेंगे, बेसिक वाला नहीं करो. टू पार्टिकल्स ऑफ, एंड साइन कन्वेंशन लगाना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट. टू पार्टिकल्स ऑफ masses m and 2m moving opposite direction elastically they collide with velocity 2v and v. देखो ये पार्टिकल 2v जा रहा है, ये पार्टिकल v जा रहा है. ओके, फाइंड देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन. कोलिजन के बाद क्या होगा, मतलब इनडायरेक्टली v1 v2 चाहिए विथ साइन कन्वेंशंस यूज एंड टेल आंसर. इन टर्म्स ऑफ v में आएगा आंसर. Sir, V will be negative direction, right? या v1 is how much, v2 is how much. When you substituting here, u2 is nothing but v minus v लगाने का, right? Initial velocities, right?
So I got minus 2e for V1. V1 is minus 2v, yes, correct. So minus 2v and v. Yes, correct. अगर एग्जाम में फॉर्मूला भूल गया तो क्या करेंगे आप लोग? टू इक्वेशन बनाने का। कौन सा? इनिशियल मोमेंटम इक्वल फाइनल मोमेंटम बनाने का, देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इलास्टिक कोलिजन है ना। देन आपको दोनों से इक्वेशन सॉल्व किया तभी विल गेट Sir, I got V1 as minus 2V and V2 as V. यस करेक्ट। समय चेक करो JEE Main क्वेश्चन। A 20 kg ball moving with velocity is much collides with 10 kg ball with velocity is much. What are the velocities after collision if the collisions are perfectly elastic collision? So over here also the sign convention will be there, right? Ah, everywhere sign convention only you have to use. Sir, but how do you know which one is positive and which one is negative? आप ड्रॉ करो, राइट साइड पॉजिटिव लेफ्ट साइड नेगेटिव ऑलवेज ड्रॉ करके लगाओ। So what is saying? A 20 kg ball moving with a 20 kg ball है moving with velocity 10 meters per second collides with another ball 10 kg ball is moving with 20 meters per second. Collides हो रहे हैं ना दोनों 20 meters per second, मतलब ये वाला 20 meters per second. What is the velocities if they are moving like this? So minus 10 and 20. Sir, I got minus Same. 10. How much V1 is? Minus V1 is 10, minus 10 and Yes, V2 is V2. 20. V2 is 20 years correct. Yeah. Okay. Now here we have special cases वगैरह में करेंगे स्पेशल केस। ओके Yeah, sir, yeah. या स्पेशल केसेस भी करेंगे। ओके एनर्जी है ना आपके पास? Yeah. स्पेशल केस देखो, तो इसमें इसी फॉर्मूले में स्पेशल केसेस है। देखो सपोज मान लो if two bodies of equal masses collide elastically and the collision is head on, they exchange their velocities. Very important, इसी में क्वेश्चन some questions came. So when two bodies of equal masses collide elastically, अभी तक टू डिफरेंट मासेस है, आपको देखना पड़ेगा इलास्टिक कोलिजन में सेम मासेस अगर होगा तो दे ऑलवेज एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज। मतलब इफ आई सब डायरेक्शन लगाओ, सी मोशन आल्सो, बट मासेस सेम हुआ तो क्या होगा? दे एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज। मतलब क्या होगा? v1 का वेलोसिटी क्या होगा आफ्टर कोलिजन के बाद? v1 वेलोसिटी क्या हो जाएगा? दे एक्सचेंज, राइट? v1 विल बी 0 and v2 will be how much? u1 हो जाएगा। They always exchange the velocities. It can be any direction. Suppose it can move with 10 meters per second also. After hitting, इसके पास 10 meters per second आ जाएगा and इसके पास दूसरा velocity आ जाएगा। So very important आपको, when this condition will be satisfied, when the two masses are same, when these two masses are same, then only they exchange their velocities. Sir, 1 second.
अगर हम लोग फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया तो भी विल गेट द आंसर सेम, v1 इक्वल टू But that's long. सो स्पेशल केसेस आपको लर्न करना पड़ेगा, दैट टू ये स्पेशल केस बहुत इंपॉर्टेंट है. Yeah, got it. Sir, wait. Sir, if you two, oh, okay, never mind. Come on, then let me copy. So both the masses are same. चलो हो गया. Now example देखो, suppose two masses are there, equal masses है, they are moving with 4 meters per second, 3 meters per second. Then क्या होगा after collision, क्या होगा? You have to think One that will be okay, 3 and V2 will be 4. this will be 3, this will be 4. For the sign, it'll be the same sign only. Like over here, same U2 direction is only. -3. So minus V1 also minus is 3 -3. जाएगा. Yes, Okay. direction will be same. Now same way देखो 2 and 0. So after collision क्या होगा? After collision के बाद ये 0 हो जाएगा, ये will be moved with 2 meters per second. Yeah. This will be satisfied only when they both masses are same. आपको they will in the examples में they will not give, by seeing you will understand okay the masses are same, ये change हो जाएगा बोल के आपको learn करना पड़ेगा. It's very important case.